properties, etc. They are the facts. Then concept, idea or ideas that permit the learner to classify and understand variety of phenomena, that is the concept. Then comes the principle, the relationship between two or more concepts become principle. तो आपके कंटेंट एनालिसिस में फैक्ट्स होंगे, देन कॉन्सेप्ट होगा, देन प्रिंसिपल होंगे, एंड देन प्रोसीजर, स्टैंडर्ड वे ऑफ आइदर सर्टेन ऑपरेशंस और डूइंग सर्टेन ऑपरेशंस, तो वो दैट इज द प्रोसीजर, एंड देन एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू एनी सिचुएशन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग. तो फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रोसीजर है, और जब आपने इसको समझ लिया तो हाउ यू विल अप्लाई, दिस इज द कंटेंट एनालिसिस में आप अपने को इस तरह से एलिमेंट्स के द्वारा आप इसको एनालिसिस आप इसका करेंगे. देन एक एग्जाम्पल से आइए हम इसको समझते हैं. एक छोटा एग्जाम्पल है कि पृथ्वी का जो व्यास, अर्धव्यास है, रेडियस है, दैट इज 6370 किलोमीटर. ये इट इज ए फैक्ट. जब आप देखेंगे तो किताबों में ये लिखा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6370 किलोमीटर. कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सेस्मिक वेव्स जो हैं या भूकंपीय तरंगे जो हैं, जब भी आप कोई विस्फोट करते हैं और जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, दे आर कॉल्ड द seismic waves. तो seismic waves travel with different velocities. Seismic waves कई प्रकार की होती हैं और उनमें से जो भी waves होंगी, जो तरंगे होंगी, मोटे तौर पे वो अलग अलग गति से गमन करती हैं. तो ये एक कॉन्सेप्ट है. प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि वेलोसिटी ऑफ seismic waves, भूकंपीय तरंगों का जो वेग है, depends upon the density of the medium through which it travels. Seismic waves different velocity से travel करती हैं, ये concept है, लेकिन जो velocity वो depend करेगी density of medium पर, जिस माध्यम से वो गुजर रही हैं, गमन कर रही हैं, वो density क्या है उस पर उनकी velocity depend करेगी. ये एक principle है. इस principle के आधार पर प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि लॉग ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स. लॉग मतलब वर्टिकली, वो जब गहराई पे हम जाएंगे तो गहराई पे जाने पे इनके सेस्मिक वेव्स के बिहेवियर में डेप्थ वाइज क्या चेंज होगा, वर्टिकली जो चेंज हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉग, LOG, लॉग. तो सेस्मिक वेव्स के बिहेवियर में वर्टिकली क्या चेंज हो रहा है सरफेस से जब हम नीचे जा रहे हैं, वो दैट इज ए प्रोसीजर. उसका लॉग बनाते हैं, दैट इज ए प्रोसीजर. अब जब आपने ये बता दिया, आपने पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल और प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया, देन हाउ यू हैव टू अप्लाई. तो हम इसको ऐसे अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जांपल में कि हमने अपने स्टूडेंट से कहा कि क्रिएट योर ओन डायग्राम विथ ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. मतलब जैसे जैसे आप सरफेस से नीचे किलोमीटर वाइज जाते जाएंगे, वही पृथ्वी की संरचना होगी आंतरिक, तो लेकिन उस पर कैसे कैसे चेंज होगा वो आप एक डायग्राम अपना खुद का आप बनाइए. तो दैट इज एन एप्लीकेशन. तो कुछ इस प्रकार से हर सब्जेक्ट्स में सिचुएशन अलग होगी, हर सब्जेक्ट्स में होगा, बट इट इज ए, आई ट्राई टू गिव एन एग्जांपल कि हाउ इट वर्क्स, कैसे हम इसको लेके आते हैं अपने कंटेंट में, कैसे उसको समावेश करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं. दैट आई ट्राई टू गिव दिस एग्जांपल. देन टूल्स जो कंटेंट एनालिसिस के लिए हैं, जैसे कि हमने आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो ये है कि आप उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में उसको ब्रेक करना है और आप उसको थिंक करना है. सो दैट इज कॉल्ड ए माइंड मैप और स्प्रे डायग्राम. दे आर द इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर कंटेंट एनालिसिस. क्या है ये? सो माइंड मैप और स्प्रे डायग्राम इज बाइफर्केशन ऑफ टॉपिक इनटू सब टॉपिक एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू फैक्ट्स कॉन्सेप्ट लेवल. तो जितना आप अंदर तक छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपका माइंड मैप या स्प्रे डायग्राम बनता जाएगा. जैसे कि माइंड मैप क्या कह रहा है कि यहाँ पर सब टॉपिक आपने एक, देयर इज ए टॉपिक, फिर सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, 3, 4, इस तरह से आपने बनाया है. तो ये एक जो बाइफर्केशन आपने किया है,
दिस इज माइंड मैप। बट व्हेन यू गो फॉर स्प्रे डायग्राम तो और माइन्यूट लेवल पे हम चले जाते हैं। ये स्प्रे डायग्राम किसी एक टेक्निकल टॉपिक को लेके है, जिसका मेन टॉपिक है इंडक्शन मोटर के बारे में हम बता रहे हैं। अब इस इंडक्शन मोटर के अंतर्गत टॉपिक्स, इसके अराउंड जो आप देख रहे हैं, दे आर द टॉपिक्स। फिर और उसके नीचे गए तो सब टॉपिक्स, फिर और, तो इस प्रकार से एक टॉपिक्स को डिवाइड करते करते एक स्प्रे डायग्राम बन गया। तो बहुत माइक्रो लेवल पे जाना और उसको डायग्रामेटिकली आपने इसको एनालाइज करके यदि बनाया, जैसे कि, तो दैट इज कॉल्ड द स्प्रे डायग्राम एंड दिस इज अ टूल फॉर योर कंटेंट एनालिसिस। अब हम आते हैं कि जब हम अपना कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं तो हमको इंस्ट्रक्शनल मीडिया, मल्टीमीडिया, इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट इन द क्लासरूम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, and every teacher need to develop skills in designing and using both print and no print instructional media in any learning environment. This requires systematic planning and implementation. तो आपको कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स जो होती हैं वो ग्राफिक्स या कंटेंट के साथ में लाने के लिए वो इंस्ट्रक्शनल मीडिया के अंतर्गत आपको जाननी होती हैं और आप उसको इसमें करते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया कई प्रकार के हो सकते हैं, कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिसका एक पार्ट टेक्स्ट भी है। उसके अंदर यदि आप कोई विजुअल्स या ग्राफिक्स लाते हैं, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो या कोई इंटरेक्टिविटी आप लेके आते हैं, सो दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मीडिया। इसका जो एलिमेंट्स है, जिस आधार पे इंस्ट्रक्शनल मीडिया काम करता है, वो हमारे देखने और सुनने से जो हम एक्सेप्ट करते हैं उस पर बेस्ड है कि वर्ड्स जो हैं वो कानों पे जाते हैं, साउंड के माध्यम से जाते हैं, तो एक वर्बल मॉडल होता है। और जब हम कोई पिक्चर यूज करते हैं तो वो आंखों से डिलीवर होती है, इमेज के फॉर्म में होती है, वो एक पिक्टोरियल मॉडल होता है। तो इस प्रकार से जब हम इसको दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो ये मल्टीमीडिया लर्निंग बनती है और ये इफेक्टिव लर्निंग के और इफेक्टिव डिलीवरी के का माध्यम होती है। तो ये इस बताने का इसमें प्रयास आपको किया गया है। अब मल्टीमीडिया लर्निंग जो है, आप सभी इसको जानते हैं और शब्द को आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन दैट यूजेस टू मॉडलिटीज concurrently. This means learning through the combined use of visuals, through pictures, animations, text and videos, and audio through narrated voice over. तो इस प्रकार से ये आपका मल्टीमीडिया लर्निंग का मॉडल बनता है। इसके जब आप अपना कोई मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, जब आप कोई पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, जब आप अपना कोई डिजाइन कर रहे हैं, तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोगों को, आप सब लोग ऑलरेडी हो सकता है इसको फॉलो भी कर रहे हो और आप इसको जानते भी हो, बट यहाँ हम थोड़ा उसकी चर्चा इसमें करते हैं। तो कुछ 9-10 प्रिंसिपल हैं इसके, कि कोहेरेंस प्रिंसिपल है। क्या कोहेरेंस प्रिंसिपल है? कि पीपल लर्न बेस्ट when extraneous or distracting material is not included. And signaling principle, people learn best when they are shown exactly what to pay attention to on the screen. आप इस चित्र को देखें तो इसमें कोहेरेंस प्रिंसिपल के हिसाब से ये विजुअल सफिशिएंट है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आपने इसके साथ में यदि ये टेक्स्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया है, so this is considered as extraneous and this is not recommended. So recommended as per principle is this one, this graphic, not this one. So this is called the coherence principle, जिसमें extraneous material को include नहीं करना है। जो आपके important आप बताना चाहते हैं उसको हाईलाइट करना है, that is the signaling principle. उस पे attraction, जैसे ही आपने methodical and deliberate activity को आपने हाईलाइट किया, या इसके पहले वाली स्लाइड पे आप खुद देख लीजिए कि कोहेरेंस प्रिंसिपल को मैंने कलर से हाईलाइट किया हुआ है, कलर चेंज किया हुआ है, तो नेचुरली आपका अट्रैक्शन उस पे जाएगा। तो आप जब इस प्रकार का सिग्नलिंग कर देते हैं, सो टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस योर, सो दिस इज कॉल्ड द सिग्नलिंग प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल है रेडुंडेंसी प्रिंसिपल। पीपल लर्न बेस्ट विथ नरेशन एंड ग्राफिक्स एज अपोज टू नरेशन, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। दिस इज रेडुंडेंसी प्रिंसिपल। The spatial contiguity principle क्या है? कि people learn best when relevant text and visuals are physically close together. Redundancy आपका ये जो ग्राफिक है itself ये एक्सप्लेन कर रहा है। आप इसको अपने वॉइस से अपने एक्सप्लेन करें आप उसको विदाउट टेक्स्ट,
दैट इज रिकमेंडेड। यदि आपने यहाँ पर इसको टेक्स्ट को भी डाला हुआ है तो ये रिडंडेंट हो गया, उतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए आपको अपना कंटेंट तैयार करना है, दैट इज द रिडंडेंसी प्रिंसिपल कॉल्ड। देन स्पेटियल कॉन्टिग्यूटी। स्पेटियल कॉन्टिग्यूटी में आपने यहाँ पे ऑप्टिमल इक्विपमेंट कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपने इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो ये ज्यादा इस पे अटेंशन हमारा जा रहा है, ध्यान जा रहा है। आपने चित्र को यहाँ रखा हुआ है और अपना टेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, सो दिस इज नॉट कॉन्टिग्यूटी प्रिंसिपल, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्टिग्यूटी प्रिंसिपल और उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो फॉलो प्लीज दिस वन, दिस इज कॉल्ड स्पेटियल कॉन्टिग्यूटी प्रिंसिपल। Temporal contiguity principle, people learn best when corresponding words and visuals are presented together instead of in consecutive order. जो भी आपको देना है वो एक साथ आप देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। And segmenting principle, people learn best when information is presented in segments rather than one long continuous stream. छोटा छोटा सेगमेंट्स में आपको बताना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आप जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आपका एक वॉइस से भी आप उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों चीजें सेम टाइम पे हो रही हैं, इससे सिंक्रोनाइज्ड है, इससे सिंक्रोनाइज्ड है। सो दिस इज ओके, दिस प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड, टेम्पोरल कंटिग्यूटी प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड इन दिस डायग्राम। बट यदि आप यहाँ आते हैं तो यहाँ एक्टिविटी हो जाती है और आपका साउंड आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, वो कहीं बाद में हो रहा है, सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट इफेक्टिव। सो दिस इज कॉल्ड द टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी प्रिंसिपल। तो जो भी आप जब अपना इस प्रकार से तैयार करें तो उसमें इसका ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि और इफेक्टिव आपका कंटेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जो इसमें सेगमेंट्स में इस तरह से ये डायग्राम शो कर रहा है कि यहाँ पे इसमें सेगमेंटिंग नहीं है और इसमें आप उसको पार्ट में पहले बता रहे हैं फिर दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। सो लाइक दिस यदि आप कर रहे हैं, सो सेगमेंटिंग में मतलब एक कोई कंटिन्यूअस स्ट्रीम को एक साथ नहीं लेना है, उसको थोड़ा ब्रेक करके लेना है। दिस इज द मेजर सेगमेंटिंग प्रिंसिपल। When we come to pre-training principle, people learn more efficiently if they already know some of the basics. ये तो बिल्कुल आजमाया हुआ प्रिंसिपल है कि जब हम ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं और हमको बहुत टीम की जरूरत पड़ती है तो नेचुरली हम दो तरह के ग्रुप को हम लोग आज शामिल किए हुए हैं। एक जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जो कि ट्रेंड हैं, जो ट्रेंड एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके वहां से आए हुए हैं, और दूसरे हमारे वो हैं जो कि हम उनको धीरे धीरे डायरेक्ट हमने इन्वॉल्व कर लिया है कुछ बेसिक्स बता करके। तो ट्रेनिंग यदि आपने दी हुई है, उसकी प्लान की हुई है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सो पीपल लर्न मोर इफेक्टिवली इफ दे ऑलरेडी नो सम ऑफ द बेसिक्स। एंड द मोडालिटी प्रिंसिपल इज द पीपल लर्न बेस्ट फ्रॉम विजुअल्स एंड स्पोकन वर्ड्स देन फ्रॉम विजुअल एंड प्रिंटेड वर्ड्स। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह से प्री ट्रेनिंग आपने पहले से, ये ट्रेनिंग डायरेक्ट स्टार्ट हो गई है, यहाँ आपने पहले मैनुअल दिया हुआ है और मैनुअल को समझ करके यदि ट्रेनिंग आप काम होता है तो वो दैट इज मोर इफेक्टिव, नॉट डायरेक्टली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। यहाँ पे आप अपने वॉइस वही और डायग्राम से आप इसको एक्सप्लेन करें। यहाँ प्रिंटेड वर्ड से है तो इट इज स्लाइटली अनइफेक्टिव, तो दिस इज द मोडालिटी प्रिंसिपल, इसको फॉलो करना है। And the multimedia principle, people learn best from words and pictures than just words alone. जहां भी आप चाहें, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, जहां गुंजाइश आप समझ रहे हैं, यदि आप किसी साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं या किसी दार्शनिक के बारे में बता रहे हैं जिसका फोटोग्राफ है तो शायद और इफेक्टिव हो जाएगा। तो व्हाटएवर यू फील अप्रोप्रिएट और राइट, आप उसको अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करें, वर्ड्स के साथ पिक्चर लाने की कोशिश करें तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। And the personalization principle is that people learn best from a more informal conversational voice than an overly formal voice. आपका जो वॉइस है और जो बोलने का है वो जितना नेचुरल फॉर्म होगा, इनफॉर्मल होगा, वो उतना इफेक्टिव होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने काफी कुछ टेक्स्ट से डाल के रखा हुआ है, बट यहाँ पे आपने उसको एक सिंपल पिक्चर डाल दिया है। वो पिक्चर से आप समझाना चाहें, शायद किसी का माइक बीच में ऑन हुआ है। वी विल हैव
नहीं होगा जैसे तुम रहे हो, कुछ उसे देर तक रहती है। I think someone has his mic on. हमारे किसी पार्टिसिपेंट का माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लेंगे। तुम ऐसे फरवरी तक अभी पिछले साल के 4-5 फीस, सेकंड फीस नहीं जमा किए। मेरे किसी साथी का माइक ऑन है, कृपया उसको बंद कर लें। ऑर्गेनाइजर तो बताना नहीं चाहिए किसके लिए, किस काम का जमा करा, नहीं जमा कराते लड़कों जब तक किस नहीं। ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सो दिस इज द प्रिंसिपल जब हम उसको इस प्रकार से विजुअल और दोनों को साथ में लेते हैं। Yes, and the voice principle, the people learn best from a human voice than a computer voice, and people do not learn better from a talking head video. These are the principles. तो आप अपनी वॉइस को इस्तेमाल करना है, किसी प्रकार का टॉकिंग हेड या कंप्यूटर का वॉइस इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है, किसी प्रकार का रिकॉर्डेड या ओवरहेड टॉकिंग हेड वीडियो को इस्तेमाल ना करें। तो ये इस प्रकार से आपका ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया के। सो दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज द यूज एंड प्लेसमेंट ऑफ विजुअल एंड टेक्स्ट, टाइमिंग of bringing these both, and importance of removing extraneous content from the visual, and these need to be considered while designing the instructional media. तो फ्रेंड्स, हमने कंटेंट एनालिसिस और इसके बारे में आपसे अभी चर्चा की। यहाँ पे कुछ आप यदि ई कंटेंट बनाने जा रहे हैं तो देयर आर सम क्वेश्चंस, अभी हम इस पे थोड़ा सा आगे डिस्कस भी करेंगे। आप जस्ट इसको देखें एंड इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन कि हम इज इट इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर ई कंटेंट। क्या आप ऐसा समझते हैं कि कंटेंट बनाना बिल्कुल असंभव है? आपके कॉन्टेक्स्ट में आप अपने लिए क्या समझते हैं? इज इट वेरी डिफिकल्ट? क्या ये बहुत कठिन है? व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ई कंटेंट प्रिपरेशन? क्या जो हम ई कंटेंट हमको दिया गया है बनाने को, या टास्क हमको मिला है या हमको बनाना है, उसको में ई कंटेंट बनाते समय कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? Is it interesting or boring? The whole task of the content जो भी आपको दिया जाता है या सिलेबस बेस्ड अब हम आपको सबको बनाना है क्योंकि अब ये जरूरी है, तो ये इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? Should it be essential part of teaching? क्या आप समझते हैं कि ये टीचिंग का essential part होना चाहिए? और क्या does it have certain advantages? क्या इसके कुछ फायदे हैं? और एक लास्ट का क्वेश्चन ये है कि are you ready to prepare e-content? तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको देखें, थोड़ी सी चर्चा हम आपसे और करेंगे, एंड देन हम आपसे आपके जो भी क्वेरीज या क्वेश्चन आंसर्स होंगे या जो भी आप पार्टिसिपेट डिस्कशन में करना चाहेंगे वो हम करेंगे। तो एक सिंपल अप्रोच की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अभी हम लोग जो एक बहुत वैसे तो ई कंटेंट का प्रोसेस ऐसा है कि आपको एक बहुत हाई एंड स्टूडियो के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में जो कंटेंट आप बनाएंगे दैट इज द आइडियल ई कंटेंट, और उस स्टूडियो की भी गाइडलाइंस दी गई है कि इस तरह का स्टूडियो और स्टाफ आपके पास में होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग एक सिंपल अप्रोच पे भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप मेक योर सेल्फ वेल कन्वर्सेंट विद द कंप्यूटर एंड MS ऑफिस लेटेस्ट वर्जन। ये आपके पास में यदि है, कीप योर ओन लैपटॉप MS ऑफिस लाइसेंस वर्जन, विंडो लेटेस्ट लाइसेंस वर्जन, एंड गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ हाई बैंडविड्थ। जो आपके एयरटेल के घरों में आपके ब्रॉडबैंड लगा है वो सफिशिएंट होगा, या आपके कभी मोबाइल पे जो आप एयरटेल का कुछ डेटा लिए हुए हैं वो भी आपका सफिशिएंट, उस पर आप काम कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन और एक्सपीरियंस ये है कि यदि ये सब आपके ओन आपके पास में है, भले ही आप इंस्टीट्यूशन का काम दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से हम अपनी पर्सनल बुक्स रखते थे पहले या रखते हैं, अपने कुछ आइटम्स हम अपने अपने चाहते हैं कि हम खुद रखें हमारे पास में, उसी तरह से अब ये रिक्वायरमेंट हो गया है कि हमारे पास खुद का लैपटॉप हो, खुद की कनेक्टिविटी हो और खुद का एक ऑफिस वर्जन हो। फिर आप क्या करेंगे कि सिलेक्ट टॉपिक, एनालाइज अकॉर्डिंग टू टारगेट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। फिर आप अपनी स्क्रिप्ट को चाहे तो आप पेपर पे लिख लें, या आप उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डिजाइन कर लें। जब आप ई टेक्स्ट बनाने जा रहे हैं अपना, तो आप दो अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं कि या तो आप पहले डिटेल्ड स्क्रिप्ट जो भी आपको लगता है पूरा मटेरियल भरते जाइए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितना ज्यादा मटेरियल पहले आप भरेंगे आपको आसानी होगी उसको फिर अच्छा क्रिस्प बनाने में। आप हटाते जाइए और उसको क्रिस्प करते जाइए। सो डिटेल्ड स्क्रिप्ट आप चाहें तो बना लें, और फिर आप उसको उसके बाद अपना एक
पीपीटी बनाएं रिकॉर्डिंग के लिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पीपीटी, आप कंफर्टेबल हैं तो आप पहले बुलेट पॉइंट्स लिख लें, आप अपनी पीपीटी पहले बना लें और फिर उसको एलाबोरेट करके अपना टेक्स्ट बनाएं। लेकिन जब आप दोनों चीज बनाएंगे तभी आपका ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच कंप्लीट होगी। तो ये बेसिक दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो वर्ड फाइल आपकी ई टेक्स्ट की और उसके बेस पे बना हुआ आपका पीपीटी। जब आप पीपीटी बनाएं तो ये हमको एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं कभी कभी ये करते हैं कि वो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये अप्रोच नहीं है। अप्रोच ये है कि उसमें से आप बहुत ही सेलिएंट पॉइंट्स लेके आए और फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। आपका जो वीडियो बनने वाला है या जो आप वीडियो देने वाले हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट में है, उसको असिस्ट करने के लिए है, उसका सप्लीमेंट है, नॉट द कॉपी ऑफ दैट टेक्स्ट। तो उस अप्रोच से यदि आप आएंगे तो फिर आप अपना पीपीटी बना के बेहतर एक वीडियो लेके आ पाएंगे। जब आपने स्केचेस जो बनाए हैं, जो आपने पीपीटी बनाया है, उसमें आपको इनकॉर्पोरेट रेलिवेंट स्केचेस, डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स, फिगर्स, टेबल्स एंड एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन योर ई टेक्स्ट। कहाँ आपको किस जगह पे देना है, जब आप दोबारा स्क्रॉल करेंगे अपने टेक्स्ट को या आप अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड कि हमको यहाँ टेक्स्ट इनकॉर्पोरेट करना है या आपको ये देना है। एंड वेर एवर यू टेक मटेरियल फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप उसका रेफरेंस जरूर दीजिए। हो सकता है आपका इस पे एक स्पेशल लेक्चर भी हो या ट्रेनिंग हो कभी कॉपीराइट पे। तो बहुत साधारण सी बात है कि आपको किसी का भी मटेरियल बगैर उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए नहीं लेना है। आपके लिए यदि फिगर्स लेने हैं तो क्रिएटिव कॉमन जैसे साइट बने हुए हैं जहां से आप फ्री फिगर्स या डायग्राम्स या फोटोज लेके आ सकते हैं। वो थोड़ा ध्यान आपको रखना है, उसका विशेष बल्कि मैं कहूँगा ध्यान रखना है, क्योंकि वो चीजें फिर आगे आके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देते हैं। यदि कभी आपका ये पब्लिश होगा या पोर्टल पे जाएगा तो वो ध्यान आपको रखना है। और फिर आप जो आपका टेक्स्ट और पीपीटी बन जाए उसके आधार पर आप अपने एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ये असेसमेंट तैयार कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ये फॉर्मेटिंग का, कि फॉर्मेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपके फॉन्ट्स आप कद लेना, आपकी जो स्पेसिंग है। नॉर्मली देखिए, आप जैसे ये स्लाइड देख रहे हैं तो इसमें एक रूल होता है कि आपको चारों तरफ एक मार्जिन छोड़ना चाहिए, लाइन के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो जब आप शुरू से ही अप्रोच रखेंगे, अपनी हैबिट रखेंगे, तो आपको ये कंटेंट बनाने में आसानी होगी। और यदि आप थोड़ा कैजुअल बनाएंगे कि आपका ये कंटेंट बिल्कुल एक मार्जिन से शुरू हुआ है और हैफेज़र्ड लिखा हुआ है, तो जो आपका रिव्यूअर होगा या तो वो करेक्ट करेगा या आपको वापस भेजेगा, तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स करेक्शंस करने पड़ेंगे, तो आपको इरिटेशन होगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो फॉर्मेटिंग पे थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे पहले से ही। और टेम्पलेट ले लीजिए, आपके जो भी आपसे काम होना है उसका टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, उस पर काम करेंगे तो जल्दी होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी। अब हम कुछ थोड़े से रेगुलेशंस इस विषय में आ गए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे ई कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जो कि आपको अवेलेबल हैं। कुछ की हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि देयर आर मेनी गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग ई कंटेंट डेवलपमेंट and minimum standards of instruction for the grant of certificate or diploma or degree through online mode। अब बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इन गाइडलाइंस को पढ़ना चाहिए। देयर इज ए स्कीम ई-पीजी पाठशाला under the National Mission on Education through ICT NME ICT project. Any PG teacher of the college university can submit proposal as PI और आप उस पर काम कर सकते हैं। ऑलरेडी काम काफी हो चुका है, मुझे आई डाउट कि ये शायद कंटिन्यू है कि नहीं, बट देयर इज ए स्कीम और आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन GOIMHRD गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेज फॉर SAM, ये 1 जून 2017 को हुई है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइन फॉर प्रोवाइडिंग स्किल बेस्ड एजुकेशन अंडर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, दिस इज NSQF, ये भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then University Grants Commission Credit Framework for online learning courses through study webs of active learning for young aspiring minds, Regulation 2021 आ चुका है, उसको भी हमें देखना चाहिए। Then UGC Guidelines for E-Content Development of Project Submission for Assistance from UGC under NME ICT. Then University Grants Commission Establishment and Operation of Academic Bank of Credit, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम अब लागू हो चुका है कि कितने क्रेडिट विद्यार्थी को मिलेंगे और फिर वो आगे क्रेडिट जोड़ करके वो कैसे अगले कोर्स को में चला जाएगा। सो दैट रेगुलेशन वी शुड हैव इन माइंड, वी शुड रीड इट। एंड देन MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड इनिशिएटिव अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी भी गाइडलाइंस MHRD ने दी हुई हैं। एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑनलाइन कोर्स एंड प्रोग्राम्स रेगुलेशन 2018।
तो दीज आर दी गाइडलाइंस। जो स्वयं का जो स्कोप है वो एक बार हम यहाँ फिर से देखते हैं कि करिकुलम बेस्ड कोर्सेज कंटेंट्स कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। तो इस सभी डोमेन्स में का स्कोप है एक कंटेंट तैयार करने का। सर्टिफिकेशन के साथ ये स्वयं का स्कोप है। किसी भी स्ट्रीम के कोर्स इस स्वयं पोर्टल के अंतर्गत तैयार हो सकते हैं और हो रहे हैं। एंड इसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज एंड ओवरसीइंग द असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ कोर्स ऑफर्ड ऑन स्वयं। सो देयर आर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स इसके लिए बनाए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो यूजीसी है वो नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, एंड सीईसी जो है वो नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है, और इग्नू जो है वो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए है। यहाँ हम क्रेडिट की भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा, कि जब हम ऑनलाइन कोर्स करने जाएंगे या तो हमको क्रेडिट या अवार्ड करनी है स्टूडेंट को, तो यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड वो क्रेडिट है। तो इट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ आवर्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड पर वीक। 1 credit is equivalent to 1 hour of teaching, lecture or tutorial, or 2 hours of practical work, field work per week। तो यदि हम कोई कोर्स डिजाइन करने जा रहे हैं तो हमको इस तरह से हम उसके बारे में सोच सकते हैं, क्रेडिट के बारे में। जब हम इस तरह से प्लान करके और एनालिसिस करके जाएंगे तो हम एक अच्छा कोर्स जो है वो ऑनलाइन डिजाइन कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक सर्टिफिकेट कोर्स यदि हमको लाना है तो 20 to 30 credits of 6 months ड्यूरेशन हम इस प्रकार से लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पर्पस ये था कि आप इस प्रकार से यदि ई कंटेंट बनाने में इंटरेस्टेड हैं और आपको बनाने की आवश्यकता भी है आज, तो हाँ, आप हायर एजुकेशन के साथ में काम कर सकते हैं। आप सिस्टमेटिक रिपोजिटरी बनाने का काम कर सकते हैं, लर्निंग रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं, और स्वयं गाइडलाइन के हिसाब से आप ऑनलाइन कोर्स को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्रिएटर के रूप में काम कर सकते हैं। ये चर्चा मुझे आपसे करनी थी। मेरा बात लगभग खत्म हो चुकी है। हमारे पार्टिसिपेंट यदि मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ आप लोगों का कोई सुझाव है तो डेफिनेटली आई इनवाइट। थैंक यू। हेलो हेलो जी नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, हम लोगों ने ई कंटेंट हायर एजुकेशन के लिए बनाए हैं, पर इस समय वो जो साइट है वो ओपन नहीं हो रही और हम बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे दिखाएं? अच्छा मैडम, ये थोड़ा सा ये इशू हो सकता है एज फार आई अंडरस्टैंड कि जो जी। एलएमएस मैपाइटी के थ्रू हुआ है वो उनके लॉगिन और पासवर्ड का कुछ इशू है, वो अभी सॉल्व हो जाएगा। एंड आपने अच्छा बताया, आई विल आल्सो कन्वे टू हायर एजुकेशन, और वो आप कुछ ही समय बाद उसको फ्रीली उसको एक्सेस कर पाएंगे आप जो है। जी, जैसे शुरू में मैं मतलब ई कंटेंट की टेक्निकल टीम में भी हूँ, वैलिडेशन बोर्ड में भी हूँ, तो हम बच्चों को मतलब दिखा रहे थे, मतलब जैसा जैसा वो दिख रहा था कंटेंट, बच्चे भी बड़े इंटरेस्टेड थे। अब बच्चे थोड़े से वो हो गए, मैंने 2-4 को रजिस्टर भी कराया। पर आप वो दिख नहीं रहा है, तो मैडम ये तो कंटेंट नहीं दिख रहा है। अच्छा, दूसरे टीचर्स भी ये पूछ रहे हैं कि ये बना है तो इसका बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है। यस नहीं तो उसका मैडम बिल्कुल आपका कहना सही है, और वो लिंक प्रोवाइड करना है। कहीं कुछ गैप इन लोगों का बीच में चल रहा है, और डेफिनेटली वो गैप बहुत जल्दी कम वो हो जाएगा। एंड दिस फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल कन्वे इट टू हायर एजुकेशन आल्सो, एंड आई होप वेरी सून इट विल बी रिजॉल्व्ड। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यस, एनी अदर पर्सन? If anyone else has any query, please ask. Participants, if you have any query, please ask. Okay. If anyone has any query, you can post at the chat box. So now it's time to say thanks to the resource person. Thanks, Dr. Rakesh Srivastava sir, for your presentation regarding Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh, and from the Center of Internal Quality Assurance, SICA of Madhya Pradesh Bhoj Open University. We are thankful to you, sir, and we will be in touch with you in your future endeavors also. Now the next session begins at 3:45 p.m.
that is 15 minutes from now, 15 to 20 minutes from now, and the session would be by Dr. V. Joshit from Department of Education, Central University of Kerala. And the resource person would be, now the session chair would be Dr. Professor S.P. Shukla from TRS College, Rewa. He is an expert of eminence for NAC in Madhya Pradesh. So till then, we will meet at 3:45 sharp. Thank you.
Good afternoon to one and all. Now, in the session 4 of day 4, the resource person is Dr. VP Joshit, who will be taking his session on e-assessment, and he is from Department of Education, Central University of Kerala. So apart from him, the sessions chair is Professor S.P. Shukla sir, who is a professor, TRS College, Rewa, Madhya Pradesh, and he is an expert of eminence for NAC in Madhya Pradesh. So welcome to Dr. S.P. Shukla sir as well. So over to Dr. VP Joshit sir. Thank you, ma'am. So very good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine, fine. So today we'll be discussing on certain other areas which sometimes you will be familiar with. Today I'll be talking about the assessment part. And in the case of assessment, actually assessment is a very difficult area. The understanding is that we have different modes of assessment. Normally we go for objective type of assessment where it is very easy to assess. We'll get a concrete result. We have descriptive assessment. We have pictorial form of assessment. We have qualitative assessment. So different types of assessments are going on. And NTA, National Testing Agency, and Government of India, they come up with an assessment platform which is known as eSuleg. eSuleg is a platform where you will have different types of assessment, and it is not an open platform. This is a platform which is available for those who are setting the question paper for the various different examinations. This is one thing. Now, I'll be taking you to one platform where you can have the assessment. You can just try with the classroom, and you can just check that whether it can be possible with other students and it can be possible with other type of learning. So before that, I'll just try to collaborate with you. So I'm sharing my screen. I think you are seeing my screen properly. Are you able to see my screen? Are you able to see my screen? Yes, sir. It is visible, sir. Yeah. Okay. So what I'm trying to do, I'm just trying to connect with you. See, you are sitting at different parts and I'm here in Kerala. So what I'm trying to do, I'm just trying to connect with you. So I'll be sharing a link in the chat box right now. So I kindly request you to click on the link, type your name and join to my session. So just like you join for different activity, here also I'm just trying to share a link. Hope you have received the link. Link is there in the chat box. So just I'm trying to connect. Connect means people at various parts. I'm trying to collect synchronously, collaborating with my screen. So now just see how many people are. Yeah, the first entry came, second entry came. See, your names are here. Rakesh Kumar sir has came, Vivek Verma sir came. So all the names are available. I just try to click. I just request you to try to click on the link and join to the screen. Yeah. Just after clicking, give your name and join. Very simple exercise, which is not very difficult or something. Yeah, I have got 6 people connected. It's a very big group. The total count of the group is right now 88. So I just feel at least half of them will be connected to my screen. Good. Now 12 people are connected. Just simple click on the link. Simple click on the link and just give your name so that you will be in my screen. Yeah. Only 14. See, you can see your names also in my screen. See all the names which are connected, which is there in my screen.
Requesting others also. I just got only 15 connected. आप चैट बॉक्स में एक लिंक होगा, उसको सिंपली क्लिक कीजिए और आपका नाम टाइप करके कनेक्ट कीजिए. See, I have sent the link again. Requesting others, those who have joined late, kindly click on the link and type your name and connect. See, we are connected to a synchronized screen. Yeah. See, we have a very huge number of participants. 92 participants are online, but only 18 people are connected. Again requesting, kindly click on the link and connect. Yeah, only 21. I didn't get even 1/4. Yeah. Once again, if you are there in line, please get connected. Yeah, only 25. See, 94 participants are online. सर कोड तो कुछ पेश ना करो सर, जस्ट अभी पे मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप वो लिंक पे क्लिक करके आपका नाम देके ज्वाइन कर दो. नो नीड ऑफ पेस्टिंग कोड एंड ऑल. Again, I think you are hearing me properly. Yeah. Again requesting, it's a very big group of 100 people. I'm not getting even around 40 people to my screen. It's very simple to connect. Please do understand. Just I'll be waiting for 30 people. Yeah, 29, 30 ho gaya. Good. Again, if somebody is still waiting to connect, 31, good. Good. So just I'm scrolling my screen once again. You can see your names here. See, you can see your names here. 32 people are connected. अभी मैंने क्या किया, मैं इधर केरल में बैठ के, आप जो डिफरेंट प्लेस में बैठ कर हम एक साथ एक स्क्रीन पे सिंक्रोनाइज होके कनेक्ट कर दिए. So we have been synchronized to one screen and we are connected each other. Now whatever I could do from here, it will be reflected on your screen, and whatever you could do from there also, that can be reflected to my screen. This is understanding. Okay, 34 people got into the screen. Very good. Now I think nobody is further trying. Just I am going with yeah, we have 35 people. Now just listen please. So this is a way of connecting. One way is that मैंने तो लिंक भेजा है, वो लिंक पे आपने क्लिक करके कनेक्ट हो गया. दूसरा तरीका है कि just you type join my queues. Join my queues गूगल पे टाइप कर दो. अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूं, but that way is like this. You type join my queues और कोड भी पूछेगा. कोड है 998694. जब कोड डाले तो एक लिंक पे कनेक्ट हो जाएगा. So this is only two different ways of connecting. One is to type with join my queues and sharing the code, you will get connected. And the one is directly clicking the link, you will get connected. Now I am going to start.
See, I'm going to start. Some questions will be coming in your screen. Just respond to the question. No need to worry about whether it is right or wrong. Our understanding is that whether we are working with the process and process to chalta hai ya nahi, this is only the case that we are working with. We are just thinking that whether this process is going on or not that whether you know the question or not. So just I'm just clicking on it. Now questions will be there on your screen. Kindly check with the screen and respond to the question. Yeah, I have removed the music. Please see the questions in your screen, read the question and respond to that. Yeah, Pragya ma'am has started responding. Very good. Many people have responded. Very good. Requesting everyone to respond. Just we are trying to get how you can respond. Somewhere around 5-6 people have not started. Please don't worry about the question. Whatever may be your response, you are getting an understanding on the process. So many people are doing very well in the sense that they are working on the screen. They are responding to the questions or commands which are there, but still many have not started. I request everyone kindly check your screen and respond to the question. Again requesting, once again requesting those who have not started responding, kindly start your responses. Many people not started, just it is visible in my screen.
Once again, I'm scrolling down. Once again, I'm scrolling down. See the differences in the screen. See, some people have not again started. Just. So now it is almost done. Now it is almost done. So I'm going to stop the quiz. See, some assessment has been done. We are not counting the marks or something, but I'm going to stop the quiz. So I'm just clicking on the end button here. Dr. Joshi, Dr. Yeah, ma'am. Dixit here. Yeah, tell me, ma'am. Sir, where to pay this code? Actually, I have joined the quiz, but I do not find the place to pay the code. No, there is no need of pasting the code, ma'am. Only thing is when you click, what is your good name, ma'am? Actually, I am not participating in this quiz because I have joined, log in the quiz, but don't find the place to paste the code. नहीं कोड तो प्लेस नहीं करना है मैम, आप सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करने से आपका नाम देके सीधे इसमें आ सकता है। नो नीड ऑफ पेज। ओके, बिकॉज कोड तो कुछ नहीं है, मैंने तो लिंक भेजा है जो चैट बॉक्स पे, उसमें जब आप क्लिक करने समय आपका सीधे आपका नाम पूछेगा। व्हेन यू गिव योर नेम ऑटोमेटिकली यू आर टेकन इनटू द क्विज। दिस इज द थिंग। Kindly mute the mic. So now just I'm stopping the thing. See, I have just clicked on the button end. Now, yeah. Now what happens? See my screen. See, we have some positions. First position is some sir has got the first place, second place, third place. All these positions are here. After that, just to see the performance of others. See, we have the different question. एक बार आप क्वेश्चन देखो, you have 5 different question. पहला जो मोहम्मद सर को क्या हो गया, 4 क्वेश्चंस उसका राइट था, 1 क्वेश्चन रॉन्ग था। आत्मिका मैम का 4 क्वेश्चन तो ठीक था, 1 क्वेश्चन रॉन्ग था। So all these data are displayed here. Now just go down. See, we'll see those people who have not attended even 1 question. See, their scores are also visible. They have joined, they have received the question, but they have not attended the question. So this is understanding. Now, just I'm going to see the question. Just I'm trying with the question. See the first question. Out of the following, which is not a video creation software, you have the 4 different choices, and 18 people made it as a correct answer. Because you have learned already near port, so आपको जानता होगा ये क्या है, ठीक कौन सा question है. So 18 correct, 14 incorrect. See the second question. Moodle is a learning management system. Yesterday I have taken. I have told about the person also. See, 15 correct, 17 incorrect. So like that we have the data. Now, I'm just going with the question. Review the question. See the first question. Out of the following, which is not a video creation software. 4 लोगों को first choice दिया है AppOurSoft. 6 players have given Screencastify. 18 players have made Nearport, and 4 players have made presentation to Perpod. So similarly, every question can be checked out. See the second question. Second question is marked as the longest question. Because it has the time taken by this question is very high. Just 22 seconds have been taken, so it has been marked as the longest question. Third question,
Fourth question. Fourth question is regarded as the toughest question because only 20% of the participants have made it right. So this is understanding. Now after all getting the understanding, see, I'm going to download the result. See, result is getting prepared. Result is getting prepared and it is getting downloaded. See, it is opening. Now the result is getting opened. See the result. I think you are seeing the screen again. Are you able to see the Excel sheet? Are you able to see an Excel sheet? Yes, sir. Yeah. Yeah, we are. See the Excel sheet open. See, Yes, first sir. question you are seeing here. Uska to kya tarika kya question hai, multiple choice. Question accuracy is 37%. Average time is given. 19 people made correct. All 19 people unattempted. And jo pale wala, jo Nisamuddin sir ko kitna ho gaya, near port, sab, all these details are here. Now, if you want to view it based on, see, we are viewing it based on different thing, participant data. See, participant data is there. Entire participant data is there. Even the device in which you have logged in is there. Please see. Mohammad Nisamuddin sir ने Windows पे login किया है. Tripadi sir ने Android पे login किया है. All this data is there. I may not be knowing which device you have logged in, but the data is available here. Time का data इधर है. Quiz का details है. अभी तो 51 participants था. 51 attempt हो गया. 27% accuracy. So this is what. So what we have done. See, I have just connected you to a screen. In which, sitting at different places, we all were connected and we were just doing some task as per the command received from some person. So very simple exercise, which is not very big or something. Just the thing is that we are getting connected first. And after getting connected, हमने क्या किया? We are just receiving commands from one end. Now I am giving the commands because I at this point of time acting as teacher. So you are responding to my question. You are responding to the command which I have given. Now you are getting whatever it is. So this is a way. And here we have connected synchronously. So assessment, when you want to get it in a formative way, you can go for any type of synchronized mode of testing. Now, see here, at this point, I have acted as a teacher. And the various teachers who have been the participants of this workshop, they were acting as the learners. Now we'll just have the reverse in the sense that we'll go with teachers. Now see, for this purpose, what I'm going to do. See, I kindly request you to Google. Very simply, I kindly request you to Google quizzes. So you have to simply type in the Google. See, this is a Google QUIZIZZ quizzes. मैंने Google पे quizzes type किया. So you will see an icon, or you will see something called quizzes.com. Quizzes.com, or simply type directly in the URL quizzes.com. So two things, either you can Google quizzes, or you can simply type quizzes.com in the URL. Just I'm typing it. See quizzes.com in the URL, or you can type quizzes in the Google. Now please sign up. Sign up कैसे करना है? Sign up Gmail से करना है, Google से करना है. आप sign up करने के बाद मुझे message डालो that it is done or yes.
Sir, as an admin or नहीं, other admin, option? admin तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जस्ट सिंपल साइन अप है ना, क्या पूछ रहा है उधर? Sign up as teacher. If Yes. it is, yeah. Now after signing up, use the Gmail to sign up. Why? Because then you should not read that, you should not remember that user ID and password. Use Gmail for signing up. So sign up करने के बाद you will be reaching to the home page of that qsys.com or qsys. उसके बाद मुझे एक मैसेज डालो that done. Just I can understand that you have signed in. So very simple task, requesting everyone to do. You can do it from mobile also, no issue with that. Sir, it asks school work or personal use. Where Anything. are you using? Anything, sir. You can give anything, sir. No issue. Okay. Requesting all who have participated, kindly sign up. सर उसमें वो गेम वाला ही आ रहा है, शो हो रहा है वो उसमें तो क्या है मैम, आपका जो URL पे कुछ दिक्कत है, आपका URL पे qsys.com/join होगा ना? अच्छा, या qsys.com सिर्फ टाइप कर दो, ज्वाइन को कट कर दो. सो ज्वाइन स्टूडेंट्स के लिए है, आप सिर्फ URL पे qsys.com टाइप कर दो, सीधे साइन अप के लिए जाओगे. It's a very simple exercise, very easy to handle, and whatever you are creating today will be saving forever. And just sign up with the Google so that you don't need to remember a separate user ID and password. So after signing up, you will be seeing a screen. What will you teach today? Am I right? Those who have signed in, they will see that screen. What will you teach today? So sign in करने के बाद मुझे एक मैसेज डालो that done. Requesting others also. This is a simple exercise. Please understand that technological sessions are only useful when you be into that. मैम एक काम कर दो, मैं अभी चैट बॉक्स पे डाल रहा हूं, वही स्पेलिंग एक बार देखो, ऐसा ही URL पे टाइप कर दो, you will get into that, no issue. एक बार स्पेलिंग चेक कर दो, QS is. After signing in, please give me a message so that I can understand that you are signed in.
So after signing in, you will see a message. That home page of the screen will show like, what will you teach today? So this is a home page. I think now my screen and your screen are same. Kindly check it. Is it okay? Just see your screen and just compare with my screen. Yeah, fine. It will be same, sir. It will be same, ma'am. What is your issue? Kindly tell me. Sir, choose your plan they are asking for. नहीं, ऐसा तो नहीं जाएगा मैम. You सिर्फ qsys.com सीधे URL पे टाइप कर दो and sign up कर दो. Free. Plan कुछ नहीं choose करना. URL पे qsys.com टाइप कर दो, sign up कर दो. Sign up में Google से कर दो. So you have to select your Google ID, Gmail ID. Automatically you will be there in this screen. Plan तो choose नहीं करना है. हम तो free plan पे जा रहे हैं. See now in my screen, see there are different things are coming: career education, math, English, social studies, languages, science, computers, creative arts, health and physical education. Everything is there. See, there are a lot of ma'am, I'll come there. See, there are a lot of available question banks which are there in these different subjects in QSys. See, many different question banks are available. Now, what I'm going to do, just I'm trying to show you how to create a question. So the task with you is that you have to create minimum 3 questions, any question, any common type of question. You have to create minimum 3 questions. And you have to share the link. I'll be just checking the link and I'll be telling you whether the link is proper or not. So we'll start working. Now we are just in the role of a teacher. Our understanding is that we are the teachers now. We are creating a small quiz or we are creating a small assessment for our learners. And just I'll show you how. See, you see the create button here. You click on create. Once you click on create, there are 2 things coming. One is lesson and another one is quiz. You can click select a lesson also, no issue. But here I am selecting quiz. So पहले क्या किया था? एक बार lesson था और quiz था. मैंने तो quiz को choose किया. Name of the quiz. See, I am just selecting a quiz. What? MP Open University. So just I have given the name as MPBOU. You can give any name, current affairs, chemistry, physics, whatever the name. For my understanding, since I have a lot of quizzes in the box, so I have given a name like this. No, मैं तो subject choose कर रहा हूँ. There are different subjects here. I'm selecting it as professional development. Now next. See, this is a thing. Now you have an option. Now you are seeing the screen. You have an option to either to teleport question from the library. Means there are some questions. There are a lot of questions which are there in the question bank. And that questions can be teleported or imported, whatever it is. Now you have other choice. You have other choice that you can create a new question. So I am using the create. So I'm clicking on multiple choice. So when I click on multiple choice, see, question tagline or question box is coming. I'm just typing the question.
who is the present Chief Justice of India? Just I'm typing a question, simple question, so that everybody can understand. So I have typed a question. Now I need to give the answers. I need to get the answers. 4 choices are there. You are seeing the choice there. 4 choices are there. See, I'm giving an answer to the question in the sense that I'm trying to give 4 different alternatives. You can also type any questions which you like. Any questions which you like. Now, I'm typing the first choice, Lilith. DY Chandrachud. The different choices I'm typing. I have typed the second one. Then I am typing another name. So different names I am typing. Then I am typing another name. So some names I have typed. Now the second one is the right answer. I have clicked on that. See, if I want to put the image, I can put the image also. See, I'm getting the images of the person, and I can just put that image if I want to put the image. If I'm not willing to put the image, I can leave it. All these things can be done. So image can be saved and image can be uploaded, no issue in that. So now, if I want to add some explanation, for example, I am giving an answer explanation. Taken charge on November 9, 2022. Some explanation I am giving. See, explanation is okay. Now, I'm going back to the question. So, right answer is marked. The explanation is given. Now, what I'm going to do? See, the seconds is there here. See, I'm keeping 30 seconds. There is no more than correct answer. Only one correct answer is there. Then here there is an option called mark. So I put 2 points. Now I am saving the question. The first question is saved. मैंने तो एक क्वेश्चन सेव कर दिया है. उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था. वो क्वेश्चन के लिए मैंने 30 सेकंड्स डाला और I have increased the points to 2. I have given a small explanation, answer explanation. So all these things I have done. Now what I request you to create 3 questions. I request you to create 3 questions and share the link. This is a task.
you have to create 3 questions. I have told you how to create the question 1. Now, in the same way, you can go for creating another 2 questions. Same way, you can go for creating another 2 questions and share the link. Any doubt in between, you can talk to me. Any doubt in between, you can talk to me. Just मैंने तो एक question डाला है. Any number of questions can be added. This is understanding. This is not that 3 questions can be added. If you have a set of 50 questions, you can import. If you want to take questions from quizzes, you can add, select and add. If you want to create a new questions just like that we have done, you can do that also. So any number of questions can be added. This should be in your understanding. You can keep more than one right answer. You can keep explanation to each and everything. But it should reflect that which is the right answer. Now times can be done, like for example, answering the first question, you need 30 seconds. But some question, it will be taking some more time. So for that question, you need 1 minute. That can be done. So it is not same that each and every question has to go for some 30 seconds or 40 seconds or whatever it is. Any differential timing can also be given. So what is the task? Task is very simple. I have given you. You have to create 3 questions. Just for an understanding, we are working with 3 questions. And just like I have shared the link, I have connected you to my screen. You can share the link so that I'll check the link and I'll tell you that whether link will be working or it will be taken to the quiz or not. Anything, any doubt in between, you can talk to me. Again, my kind request is that you work with the system, you work with the screen so that it will give an understanding to you. So if you're simply talking about the things that it will go like this and it will go like that, it will not give any understanding, because things in technology will be learned only through trial and error mechanism. So very kind request that please do that, complete the task and just check whether it is working or not. Any issue, any point where you are finding some issues, you can talk to me. Sir, I have created 3 questions, but from where I copy link? No, आप तो पहले उसको सेव कर दो। मैं टॉप राइट पे एक सेव बटन होगा, उसमें क्लिक करके सेव कर दो। नीचे जब हम क्वेश्चन सेव करने का समय नीचे हमने क्लिक किया है और सेव कर दिया है। जब क्विज कंप्लीट करने के बाद ऊपर वह एक सेव होगा, उसमें क्लिक करके सेव कर दो। You should give some name for the quiz. After giving the name, you can save. The understanding here is that you can do this with mobile. This can be scheduled. It is not that you have to conduct in a synchronized mode. This can be scheduled. And the other thing is that what I have told you, based on the question, based on the nature of difficulty, you can schedule timing also. So after completing the task, at least with minimum 3 questions, any number of questions can be added, no issue.
After completing the task, kindly share the link. भावना मैम वो लिंक तो सही नहीं है, आपका जो लिंक में सीधे क्यूज पे नहीं आएगा. Done, sir. So what is your task? Again, the task is very simple. I have told you. First, you have to complete the thing. 3 questions to complete करना है. Each and every question should have a right answer. That also should be ensured. Each and every question should have a right answer. If there are multiple right answers, that also should be marked. After that, you have to save the cues. You have to save the cues. उसके बाद आप लिंक को शेयर करना है. First, ma'am, first save the cues properly, and when you save the cues will be there in your library. You have to give some name for the cues and you have to save it. उसको कुछ नाम देने के बाद आप सेव कर दो. उसके बाद जो लाइब्रेरी पे आपका क्यूज होगा उसको एक बार देख लीजिए. लाइब्रेरी पे उधर क्यूज को क्लिक करके स्टार्ट ए लाइव क्यूज कर दो. So after that you will be just going with the instruction, you will get the link. See, till now I have not received any link. You are attending a workshop and this is a 4th day, I suppose. By this time, you would have been familiar with all those type of transactions which we have to do in a class where we are working with these online platforms and online learning, whatever it is. Jagrati ma'am, that link is not right, ma'am. It is not the top over link you have to share. It is the quiz link you have to share. Top over link means the page link. This is a difference. See, whatever you see at the top in the URL, that is the link for the page. You will be directed to the page. You will not be directed to the quiz. Every quiz, when you are scheduling, it will create a time for that. See, when you are scheduling online, it will create a time for the online activity, means the synchronized activity. When you are scheduling at a later time, it will create for that purpose also. Sir, I have created three questions now. ठीक है sir. Sir, I have created 3 questions. आप लिंक शेयर कीजिए सर. लिंक किधर से शेयर करना है सर? आपका बॉक्स पे होगा. अल्पा मैम, आपका लिंक भी ठीक नहीं है. सुनीता मैम, यू आर चेक योर लिंक. एक्सक्यूज मी सर, मेरा लिंक ठीक है कि? Sunita ma'am, you have not saved. Dr. Bhavna sir. I'll check. Sunita Bhavna Jangel. जी sir. Ma'am, you have not saved the queues properly and the link is not right. You have not saved it actually. From where I have to save, it's not a highlighted option, sir. No, it is there, ma'am. On the top right, एक बार देख लीजिए. उधर आप जब 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद उसी स्क्रीन पे, just I'll show my screen once again. See, kindly check my screen. अरे यार, क्विज का लिंक किधर है?
This is a screen. मैंने तो पहला question complete किया है. See पहला question है. Now second question again I want to click on this. So after completing all these things, there is a save at the top. See. उसमें cloud का जो symbol आ रहा है means this is getting saved as cloud. So when save करने का समय नाम कुछ पूछेगा, नाम दे दो और you can save it. जया मैम का भी ठीक नहीं है, सुभाष सर का भी ठीक नहीं है. Actually, what is the problem? You are sharing the link, but the link is not taking directly to the quiz. Just to go start a live quiz. लाइब्रेरी पे जाओ, जो नाम आपने दिया है उसको क्लिक करने से you will get the understanding that live quiz it is. Now just based on the command you can do that. समझ नहीं आ रहा है साला की हद से. See previously the link I have shared. See the link. मैंने तो पहले जो लिंक शेयर किया, अभी तो लिंक एक्टिव नहीं है. डोंट क्लिक ऑन द लिंक, बट सी द लिंक. द लिंक विल बी वेरी शॉर्ट लाइक दिस. Sir, from where I get the link for my quizzes? सर जो क्यूज आपने सेव किया है उसका नाम क्लिक कर दो. There you will be getting started live quiz. There you can continue and after that you will be getting the link. Different link का जो आइकन होगा उसमें क्लिक करके लिंक मिलता है. After saving क्यूज को शुरू करो, because 10-15 क्यूज आपके पास है तो we have to initiate one ना. So not join my queues. After saving क्यूज को क्लिक करके क्यूज को स्टार्ट कर दो. उधर continue all these options. When it reaches you will see different icons. उसमें पहला वाला आइकन है लिंक का. Share that link. When you share a link to me, what I can do, I can simply click on that, automatically it asks my name. So when I type my name, it will be taken to your screen. This is understand. Super sir, it is right. Rakesh sir, you are sharing the page link. उधर तो start live क्यों आ रहा है ना, उसको क्लिक करके लिंक को शेयर कर दो सर. आप तो वो पेज का लिंक मुझे शेयर किया है, वो तो नहीं है. Sunita ma'am also shared the page link only, not the correct link for the quiz. From where we can share quiz? Ma'am, you first click on the quiz, then Yeah. there will be an option called start a live quiz. उसको click करो, continue कर दो, or you will be reaching a position where start you can have. There you will show a link.
Till now, I got only one link which was correct. Might be it's my sir. Alpha ma'am, it is right. It is not right. You are directly going to the start. It is not right. Not correct. Tell me, Sir, ma'am. it is telling scan join by QR code. No, no, not that. Mandeep Kaur ma'am, you are right. Perfect. Jakesh Kumar Rai, sir. Right, sir. Pakka. Others, what is the problem? See, very simple task I have given. I have not given any big thing like how to do those things. I have just asked you to share a link. Just you click. Just you read the messages over there. Then respond with the messages. You will be getting the link. No issue in that. Just to see the icon. Just to keep the cursor on different icon. You'll understand that. After clicking on the link, you can just click here, Control V. Sunita ma'am, it is right. Perfect. Nisamuddin sir, you are sharing the page link, not the quiz link. Page link पे क्या आ रहा है कि सिर्फ we'll go to the page only. We cannot start the quiz. Jaya Chawla ma'am, it is right. Perfect. Jaya Chawla ma'am का ठीक है. It is coming perfectly. See what I am checking, whenever you share a link, I will click on the link. I am just checking that whether myself is getting directed to your quiz. If it is getting directed means the things are working perfectly. I'm not going to the quiz because I cannot go directly to the quiz because it is in your platform. Only thing is that whether my direction to your quiz platform is perfect or not. This is what I'm checking. Others also, I request you to send the link perfectly. If those who have submitted those links, and again I'll tell you how this link is important. For example, yesterday we have learned about Moodle. आप अभी quizzes पे एक quiz डाला है. You have some 50 questions in quizzes. What you can do? You can copy the link and share it via Moodle. So different platforms can be used by integrating in a structured way. See, whatever you have learned in the last 4 or 5 days of this workshop, the kind request is that you have start working it in your classroom. See, if you are not doing it in the class, if you are not using it for your class, then what happens is that the things which you have learned will be going. Nothing will remain in your mind.
Because normally what happens in technology workshops, many people will attend the workshop for the sake of certificate. They never practice it in the classroom. And they will be attending the same workshop continuously without having a knowledge of the previous workshop. So kind request to all the respected teachers is that whatever you have learned in my session and in those other sessions, try to integrate in the classroom, try to work out on the sense that how you can link it with your sessions, link it with your class. And once you start linking it, definitely this gives an additional knowledge. This gives an additional technical knowledge. So again, I kindly request you to work it on that way so that Nisamuddin sir, you have shared an image. See the last extension of that. It goes with .png. .png is an image. Again, that is also a learning, because how you got the image is one thing. That is another learning. And actually image cannot be taken for a work. So every trial and error, very good that you have shared it, because every trial and error gives an understanding that we are learning something. What about others? We have a very huge number of participants over here. I have got only 4 or 5 people who have made the link right. See, these are very small exercises. I'm not building up anything. I'm just trying with a very small thing. And I just want to make sure that you are working with the system, you can continue with the system, and you can take this to your classrooms. And whatever that you have made today, as per my request, that will remain in your platform. That will remain in your platform. Nisamuddin sir, you click on that quiz, sir. I'll tell you, you click on the quiz first. MPBOU, that's a quiz now you have created. You click on that. Just you click on that. Uske baad udhar kya aa raha hai? What is coming over there in your screen? They will send you create QR code, translate in English, get image. वो तो नहीं है सर. आप जो क्यूज बना रखा है ना, उसमें क्लिक करने समय क्या आ रहा है आपको? Nothing. It is not coming anything. No, it will come, sir. आप एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए. मैं अभी आपको बोल. Just you share the screen. I don't know how to share the screen. एक आप जब कर्सर को मूव करने समय एक ग्रीन वाला आइकन आ रहा है ना, शेयर स्क्रीन. जस्ट यू मूव योर कर्सर ऑन दी जूम. तो उसमें शेयर स्क्रीन का एक बटन आएगा जो लाल रंग पर, और लाल नहीं है, ग्रीन रंग पर. Where I will share. चैट बॉक्स देखता है ना सब, चैट बॉक्स, चैट का जो. Yeah, I got it, but copy link send to your device. No, वो नहीं है. आप शेयर स्क्रीन का बटन मिल गया ना आपको. चैट के सामने, चैट के पास चैट बटन देख रहा है ना आप. अभी तो चैट में आप मैं ये इसके लिंक डालता है ना, उसके पास. ओहो, ओके. हाँ, चैट बटन में, चैट बटन के पास शेयर स्क्रीन है ना, शेयर स्क्रीन एक बार देख लो. सिस्टम से कनेक्टेड है? आप सिस्टम से कनेक्टेड है या मोबाइल से कनेक्टेड है? सिस्टम से. ठीक है. चैट बटन देखता है ना, चैट बटन जो आप लिंक शेयर कर रहा है. हाँ, ओके. उसके पास में एक शेयर स्क्रीन. शेयर स्क्रीन. उसको क्लिक कर दो. उसको क्लिक कर दो. Host disabled partition screen sharing.
Okay. I think I cannot share. Okay. Then just I'll share my screen. See, you can go like this. See, now whenever you are there, see, sometimes you find it very difficult to. So my library pe jao. Whatever the quiz name you have given, it will be there in the my library. Yes. Okay. If you have 1,000 quizzes also will be there. Okay. Now, उसमें तो quiz को click कर दो. उसके बाद start a live quiz होगा. उसके बाद classic. Okay. पहले start a live quiz click किया मैंने. उसके बाद क्लासिक और इंस्ट्रक्टर पेस्ट दो है, उसमें क्लासिक मैंने सेलेक्ट किया है. Okay. Now you see, after selecting classic, team, it can be played like a team. Okay. Can be run as a test. Yeah. That also you can. Now continue कर दो. Okay. क्लासिक को सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू कर दिया है हमने. Right sir. उसके बाद ये वाला है, उसमें पहला वाला जो ये लिंक का आइकन. Okay, fine. And one is Google Classroom. Google Classroom में ये लिंक कर सकते हैं. Okay, fine. Teams में directly link कर सकते हैं. So this is the link. So once you click here, Control V, chat box पे Control V. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. I'll do that. Others, what is your status? Start a live quiz. Yeah, ठीक है. Classic. I went to now classic. Continue. Yeah, I got it. सर ठीक है, पक्का. No issue. Link copied. And now just come to the chat box, sir. Chat box में click करके Control V कर दो. ठीक है, मुझे. Yeah, pasted. Yeah, पक्का. No issue. Perfect. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. What about others? What about others? I think I have demonstrated it perfectly. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I think you got the way in which you can share the link. And is there any technical problem again? You can talk to me, or else whatever you have prepared, you can just share the link. Just share the link. Those who have shared, those I have checked, I have told it right, it is perfect, no issue in that. What I have told initially, see the same thing. Now see, I am sharing the screen. I have been requesting you to share the link. This was the task which I have been doing. You were sharing the link. But again, there are some problems. Many of the links I have told, which is perfect, it is exactly perfect. There is no issue in that. See, when you have created a lot of quizzes, now you have created only one quiz and the count is 3 only. So it is easy that you could able to fetch it very easily. Amit Kumar sir, आपका तो ठीक नहीं है. Smriti ma'am, आपका भी ठीक नहीं है. So what I tell you, see, in my case, I have been taking sessions, so I'm having different quiz items in the screen. See, this is my quiz, one professional development I am clicking. Now see the options. This quiz I have created very long back. Now see the options. Previously, हमने आपसे बोल दिया कि you can start a live quiz. उसमें 2 options है, classic और instructor based. Instructor based means what? So if it is an open audience, if it is conducted in a open audience like a auditorium or so, each and every question I can click so that students can respond. Again, the timing, the pace, everything can be managed by the person who is conducting.
Here what I have done, I have used a classic modality where I have given you the time, I have given you the method, I have just told you to respond to the question as per your speed and accuracy, whatever it is. Now see another thing, asynchronous learning. In the case of asynchronous, I can schedule homework. See, now is homework custom deadline. What ma'am? सर वो एक्सेल शीट जो जैसे कि वो कितने करेक्ट किए थे, अटेम्प्ट किया है, वो कैसे मिलेगा? जैसे आपकी क्वेश्चंस पे हमने अटेम्प्ट किया. Conducting the quiz, there will be an option called download result. Quiz करने के बाद ही मिल जाएगा. Okay. When you run the quiz, जी सर. the top right पे एक छोटा सा लिंक होगा download result. वो download result में everything will be. Sir. Number of participants attended, time taken. Okay, thank you, sir. Everything. Now custom deadline is like this. Okay, for thank you, sir. Schedule. Now I am scheduling on 15th. See this quiz I am scheduling on 15th November. Then time of the quiz is 4:30 p.m. Now I am scheduling. How long the quiz will run? Quiz will run exactly for 2 minutes from 4:30. Now, if I want to create a class, I can assign to a class also. Now, if I want to directly import it to Google Classroom, there is an option here called Google Classroom. See, the first one is Google Classroom. I can click on Google Classroom. Automatically, this will be assigned to the Google Classroom in which you are attempting. Now, see the settings. Participant attempt, you can just limit it to 1 attempt, unlimited attempt, or whatever it is. Show answers during the activity, you can just make it off so that participants may not be knowing what is the right answer. If you want to give them the right answer, you can make it on. Show answers after the activity, you can make on. Now, if you want to generate unique set of questions every time, you can use that. Now, all these one by one options are available, which you can work on. So see this thing. So here what we were doing, we were just doing an asynchronous task. Asynchronous task, and finally we click on assign. Assign means it has been assigned. The date I have told you. Now, quiz का जो link इधर मिल गया हमको. See, now I am copying the link. अभी तो मैंने link copy किया है. Link copy करके मैंने तो अभी chat box पे share करना. But when you click on the link, it will not start. That's the difference because we have assigned it for a later time. And my presence in online is not needed because I have assigned it already. So no need of my presence online. Now I can schedule it to Classroom. I can schedule it to Teams. I can schedule it to Remind. I can schedule it to Twitter. Now, if I feel that some 2 more questions need to be added, I can edit the quiz. I can edit the questions. So everything is here. I am ending the assignment. Means if you want to end the assignment means I'm not conducting, I'm ending it. That's the other thing. So this is an understanding. 1 second. This is an understanding. We have scheduled in such a way. That we have scheduled it for a later time. Now, every time when you want to edit, again, I'm sharing my screen. I'll tell you how these things work. Again, I'm sharing my screen. See, I'm going to my library. Now, in between that, today I have created one quiz.
I just want to share it to my friends, like to get an understanding that how the question is of quality and all. I can click on this share. If I want to print it in different sheet of paper, I can print it. And if I want to create another copy of the quiz, I can do it. If I want to edit, again, I can edit all those things. Now, before running the quiz, if I want to see the preview can also be done. So preview is done. Things on preview is done. Everything is done. There is no issue and it works with the quiz. So I think you got a clear understanding that how this quiz is working. Now, see, before winding up, I'll give you some platforms. There are different platforms where you can conduct formative as well as summative assessment. One platform without logging in, you can conduct is Testmos. Testmos is a platform without logging in, you can conduct. Another platform where you can conduct this assessment is Papershala, where you can go for descriptive type of question. Then another platform which is very interesting where you can take it for a public audience is Kahoot. Then last class, I think you are familiar with Bluecat. There is another thing where you can go with a Nearpod, where you can go with an activity and these things will come. Nearpod will take some avatars and it will work with that. Another platform, it is Kaizala. Another platform, it is Socrates. So many different platforms which are working where you can go with the formative and summative type of assessment, depending on the nature of assessment. I have already told you, Government of India has come up with a platform which is known as e-Sulek. And the platform is not very much known to people. Why? Because the platform has been familiar with those teachers who are creating questions for their class, questions for the national level examination. e-Sulek platform has got an understanding that it can go with objective type of question, it can go with the descriptive type of question, it can go with the quality indicators, and some different sets of questions are applied. What I'm talking about, there are different platforms depending on the nature and depending on the easiness. You can do different, you can go to the different platforms. The understanding is that every platform, when you work with, the same logic is operating. It is not that you have to customize with the QCs, you have to customize with the Nearpod, you have to customize with other. Only thing is that the same logic, same way, only the screen and the the face and things will be different. So one learning which has created on a platform which will take on to the other platform. So my kind request is that the work that you have done in Moodle, yesterday we have created Moodle platform, kindly take it to your class, enroll your learners in that platform. Whatever the students that you are teaching, please make them enrolled in the platform. Start with a simple activity. So when you start with a simple activity, this learning will take to students also, and the thing which you create in the platform, that will be staying forever. Every time you can refine, every time you can delete, and whenever you want to delete, that also will be given another type of learning. So any doubt, anything if you have, you kindly, you can talk to me. Anything which I want to explain, you can talk to me. So whatever thing that you need from me, I'll be explaining to you. So any doubt or anything in the area which you need more clarity, you can ask me. Because I'm not going to another platform, because another platform also take a comprehensive understanding on the platform, because all platforms which can be taken or which can be understood with trial and error mechanism. So my request is that any question, any type of discussions which you need at this point, we will be discussing it.
So I think you have understood. Any clarity or anything that you need from my side related to the content that we have discussed or related to the any other content, the ultimate aim is that you should have an understanding that you should run a MOOC. Whenever you run a MOOC, you will be taken as a faculty for the nation, in the sense that your visibility will go from your university. It will not remain in your state, it will go throughout the country. So active teachers, dynamic teachers can go with this understanding and make sure that you become a course coordinator in the MOOC in the SWAYAM platform. So thank you very much. Anything that Motivation. Thank you so much. you want to ask me, you can ask me, otherwise we'll be winding. Is there any query on the part of the participants? I think that there is no query from anybody. I express my heartfelt thanks to Dr. B.P. Joshit, who had a very informative and interactive session with us on techniques of e-assessment. Dr. Joshit had demonstrated perfectly and proved that if you have to learn something, you have to you must have a better training. The participants who are techno-friendly might have learned a lot, but who are a little slow will learn, I believe it. And if they practice, Dr. Joshit had given sufficient information to frame a quiz as a method of evaluation. This is certainly an informative session and may add a lot to our knowledge of assessment of the students. He focused more on hands-on training, and this session is going to prove a better session for all the participants. And I once again thank to Dr. Joshit. And I also thank to the organizing team, Dr. Smita Rajan, Madam Visain, Dr. Kishore Jan, and others whom I whose name I cannot recite. Thank you very much, sir. And over to the organizing team. So thank you, sir. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot, sir, for such a wonderful, encouraging, energetic, and a thought-provoking inputs. We at the Center for Internal Quality Assurance, CICA, MPBOU Open University, BOPAL, are indebted to you, sir, and look forward to you in our future endeavors as well. Now, I request all the participants to fill the attendance. And we are at the end of the day 4 of this 5-day national online workshop on learning management system. So on tomorrow, we will be here for the 5th and last date of the workshop. And on the 5th day, in the first session, that will be from 10 a.m. to 11:30 p.m., 11:30 a.m. The resource person would be Dr. R.K. Srivastava from Institute of Excellence in Higher Education. And the topic would be effective utilization of MS Teams LMS. So till then, namaskar.